Welcome to VLearn. This is session 2 of business strategy, the process of strategy. Topic will be cover introduction, process of strategy, strategic intent, environmental and organizational analysis, identification of strategic alternatives, choices of strategy, implementation of strategy, evolution and control. Introduction. The strategy process involved in a strategy includes a number of elements. The process can be defined as a set of management decisions and actions which determine the long run directions and performances of the organization. That means स्ट्रैटेजी में जो भी हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजी में जिस भी तरीके की प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे प्रोसेस n नंबर्स ऑफ एलिमेंट के साथ क्रिएट हुए होते हैं. दैट मीन्स दे वर रिक्वायर्ड ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट. सो इफ वी हैव टू डिफाइन द प्रोसेस, so process can be defined as a set of management decision and actions which determine the long run directions and performances of the organization. प्रोसेस के अंदर वो सारे डिसीजंस और एक्शंस होते हैं जो एक कंपनी के लॉन्ग रन डायरेक्शंस और उनकी परफॉर्मेंसेस में हेल्प करते हैं. So yes, this is basically the comes into the major task of the process. That means processes consist of all that actions, all that activities which actually work towards the objective of the organization. जो हमारी organization के objectives के लिए perform कर रही होती है, वो वाले एक्शंस को एक सीक्वेंस देना, एक सीरीज देना, दैट्स ऑल इज द वर्क ऑफ द प्रोसेस. So yes, process as the same, it is a dynamic and continuous process. एक strategy के process की बात करें तो strategy process is more towards the dynamic and continuous process. Now yes, the various process of the strategy. If we discuss about the process of the strategy consists of the 4 elements. 4 elements से जुड़ा हुआ है. वो 4 elements कौन से हैं? सबसे पहला है the environmental scanning. This is the first step of the process of the strategy. अगर हम strategy के process में पहले step की बात करते हैं तो it is environmental scanning. Then the strategy formulation. That means this is how we have to formulate the strategy. Then strategy implementation. And then after evolution and control. So these are the 4 steps, 4 basic elements of the process of strategy which we will going to discuss. First, the environmental scanning. Environmental scanning is basically, as we were discussed in the previous session also, that every organization consists of the certain environments. हमारी organization में हमेशा एक आसपास उसकी सराउंडिंग्स में हमेशा एक एनवायरनमेंट रहता है. दैट एनवायरनमेंट कैन बी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, macro and micro environment. So these are the kind of an environment in which the organization basically exists. So अगर हम internal environment की बात करते हैं, as we see in the slide which is basically colored with the maroon, that is internal environment is consist of structure, culture and resources. हमारे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कल्चर क्या है, इन दैट टर्म्स दैट स्ट्रक्चर एंड कल्चर एट द सेम टाइम व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी वर बेसिकली यूजिंग. सो दिस कम्स इनटू द इंटरनल एनवायरनमेंट. वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द टास्क एनवायरनमेंट is a kind of the external environment which is consist of all the external parties of the organization. हमारी organization की जितनी भी external parties होती हैं वो उनसे जुड़ा हुआ होता है. So that comes into, वो parties कौन सी होती हैं? That's shareholder, suppliers, labor union, competitors, trade association, communities, creditors, customers, so special interest group and government. So these are those people जो कि हमारी organization से कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं के साथ परफॉर्म करते हैं. दैट मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकती. इफ डोंट वी हैव अ स्टेक होल्डर्स तो कंपनी के पास इन्वेस्टर्स नहीं होंगे. सप्लायर्स एक्चुअली सप्लाइज अस द गुड मटेरियल. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस रूल्स एंड रेगुलेशंस. The competitors actually gives us the competition in the market, or as well as they gives us the urge to perform better in the organization. So these are basically all the basic stakeholders of the organization जो organization से बाहर रहकर perform करते हैं.
And then yes, the main outer environment, that outer environment is that consist of those factors, वो those उन फैक्टर से बना हुआ होता है जो फैक्टर्स इन्वायरमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं. दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ये सारे वो इन्वायरमेंट हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं. दैट फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिक फैक्टर, कंट्री का पर्टिकुलर इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इकोनॉमी एरिया क्या है. सो इकोनॉमिक फैक्टर, the technology forces are basically comes into the technology part, technologies areas. Then political and legal forces are more the rules and regulations, the laws of that particular country. Then social and culture forces comes into the all the societal or the all the social factors or cultural factor of that particular country. So जिस भी एरिया के अंदर या जिस भी मार्केट रीजन के अंदर आप परफॉर्म कर रहे होते हो, उस मार्केट रीजन के अंदर क्या सोशल फैक्टर्स हैं, क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकली या टेक्निक वाइज एक पर्टिकुलर एरिया या एक कंट्री जो है कितनी ज़्यादा एडवांस्ड है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं. सो इन चारों को कंसीडर किया जाता है व्हेन वी वर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट द external environment. So we can say that the environment with this societal environment is basically a macro environment. ये macro environment होता है एक organization का. Task environment basically it's related to the only industry, so it is micro environment. And yes, macro and micro environment both consist with the external environment. These both actually add the external environment, and the middle one is mentioning the internal environment. So this is about the environmental scanning. That means इस step के अंदर हमारी organization को अपने internal और external दोनों environments की एक briefing देनी होती है, एक study करनी पड़ती है just to understand about the country जहाँ पर वो business कर रहा है, just to study about the customers, the suppliers, the stakeholders, just to study about them, and yes, at the same time study about the internal environment. Then the second stage is basically defines the strategy formulation. Strategy formulation is what? Kind of formulating the mission statement. Now what is a mission statement? If we discuss about mission, is all about what was the purpose. ये mission statement वो statements होती हैं which was actually giving the purposes to the organization. हमारी organization को जब एक purpose दिया जाता है, that's all comes into the mission statement. That is why it is mentioning that setting the objectives and goals. जब हम लोग objectives and goals को set करते हैं, a statement of a purpose when we were actually looking towards की organization की existing purpose क्या है, that comes into the strategic formulation. At the same time provide a sense of direction and the purpose. जब हम लोग proper direction और sense of purpose provide करवाते हैं, then drives the strategic decision making and resource allocation. That means हमारी जितनी भी, अगर हम mission statement की बात करते हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने study किया, that it actually provides the direction. ये हमें एक direction provide करवाते हैं. At the same time it work for the strategic decision making. ये उतना ही हमारे strategic decision making में भी हमें help करते हैं. And then forces the seeking of the significant performance improvement to the attain objective. That means it's basically working for the performance improvement. ये हमारी performance पर भी काम करते हैं. So this is what the mission statements. So again, mission statement as a diagram shows it is what, who is being satisfied, the customer group, right? And then what is being satisfied, the customer needs. How are the customer needs being satisfied, the distinct competency. So these are the basically three wings of the organization which is revolve around the customers, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए we actually define our business. We provide the definition of the business. Then yes, at the same time, by understanding the mission statement, apart from understanding mission statement, there should be the selection strategy related to selection strategy, how to adopt that particular area. That is why selection strategy. Selection strategy is more or less related to the corporate strategy, business strategy, functional strategy, जो कि हम लोगों ने लेवल वाइज स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी. सो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की अगर हम, जैसा कि हम सेकंड स्टेप में बात कर रहे हैं, वी वर मोर डिस्कसिंग अबाउट दी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज बेसिकली formulating that strategy which is related to the different areas, कि हम किस किस एरिया के अंदर किस किस तरीके की स्ट्रैटेजीज फॉर्म आउट कर सकते हैं.
सो इन दैट केस अगर हम कॉर्पोरेट लेवल पे बात करते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बन सकती हैं? दे वर मोर स्टेबिलिटीज, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज और अटेंचमेंट स्ट्रैटेजीज। इफ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस स्ट्रैटेजी, व्हाट काइंड ऑफ इन अ बिजनेस स्ट्रैटेजी वी वर लुकिंग फॉर? We can make comparative or a cooperative strategies. Then functional strategy. Functional strategies are more technological leadership or technological followership strategy. So these kind of strategies probably we can make. And yes, at the same time defines the policy. We have to work on the policies also, because strategy formulation is not only about working on the policies. Strategy. There is also work for the policies. So this is what providing the guideline for the decision making that links the formulation to the implementation. यानी कि to work on the various guidelines, हम लोग जितने भी हमारे decision making guidelines होते हैं, we have to perform on that just to work for the formulations and the implementations of strategies. Yes, the third step is all about the strategies implementation. That means when the company is finally start working on the implementation, जब अपनी implementation पे आती हैं, that means पहले step में जब हम लोगों ने environmental analysis की, second step में we are working on to the formulation, that means we are actually formulating that strategy formulation के बाद finally we were doing what? The implementation, हम उसे implement करेंगे. Implementation is all about the what kind of a program you were looking for, what kind of a budget you were providing, what kind of a procedure you were working. So this is all कि एक strategy implement करने से पहले हम ये सारे factors को ध्यान में रखते हैं. It's programs, budget, procedures. So this all comes into the strategy implementation. After getting the strategy implementation, implying them perfectly, then we will move towards the fourth one, that is evaluation and control. Evaluation and control is kind of you have to maintain that control on your strategy. That आपकी strategies क्या हैं, strategies आप किस तरीके से perform कर रहे हो, if they require certain kind of a modification or not, if they require then what kind of a modification they are basically looking for, या किस तरीके की changes required होते हैं. So these are all comes into the evolution and control. That is the continuous. That is why we will say that control or evolution is kind of a continuous process, क्योंकि इनकी nature बहुत ज़्यादा ongoing होती है. Now, yes, we were discussing about the strategic intent. Well, before understanding the strategic intent, we need to understand why we need to understand the strategic intent. The process has been the following process which we already started. जो भी हम लोगों ने अभी process study किया था, तो strategy process जो होता है उसके अंदर अगर बात की जाए तो एक strategic intent अपना भी एक रोल प्ले करता है. So that is what the process of strategy does not have the same step as stated by the by the slides जो कि हम लोगों ने अभी discuss किया, या जितने भी authors हैं उनसे they all given the different kind of steps for strategies. So they were not be the same as always. So in that terms there can be the other 5 kind of steps जो कि अब हम लोग one by one discuss करने वाले हैं. That is first the strategic intent, then environmental analysis, then evolution of strategic alternative and choices, strategy implementation, strategy evolution and control. So strategy intent is one of the initial step or the initial part of the organization. जब organization किसी भी तरीके की strategy formulate करना start करती है, so in that terms that organization is basically working on the strategic intent. Strategic intent is always working into the two scenarios. One is vision, another is intent. If we will discuss about the vision, vision is where the company wants to go, where we want to get to. Then at the same time how we intend to get there. That means हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम कहाँ पहुँचेंगे. This all comes into the visions plus intent. That complete the strategic intent. So in that terms we can say that the strategies are strategic intent is basically setting of the organization vision, mission, objective is the starting point of a strategy formulation. किसी भी तरीके की strategies हम start नहीं कर सकते तब तक जब तक हम लोग proper तरीके से mission, visions, objectives एक organization के decide नहीं करते. At the same time, the organization strive for achieving the end result, which are visions, mission, purpose, objective, goals, target, etc.
So yes, at the same time, the hierarchy of strategic intent lay the foundation of a strategic management to the organization. हमारी organization का जो भी एक hierarchy level है, hierarchy level in terms of the strategic intent, that is what? First, define the vision of the organization, then work on the mission, then purpose, then objective, then goal and then target. So this is the kind of a hierarchy जिसके ऊपर हमारा strategic intent काम करता है. So we were going to discuss about the vision and mission. Vision is basically what? Is an aspirational description of what an organization would like to achieve or accomplish in the mid-term or the long-term future. एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर टाइम के अंदर कितना अचीव करना चाहती है, क्या अकम्प्लिश करना चाहती है, दैट्स कम्स इनटू द विजन. It is intended to serve as a clear guide for choosing the current and future course of action. So it is a kind of the getting the clear guide for choosing the current and future course of action. हम जो भी functions या जो भी actions हम perform करेंगे, उन actions की proper guiding, that all comes into the vision part. So that means vision is more towards working on the achievement. How much we going to achieve, in what time duration we going to achieve. This is the work of a vision. Mission, it is a statement of a purpose for the company. That means mission जो होता है, mission actually provide the overall purpose to the company. In that terms, the mission statement should guide the action of the organization, spelled out its overall goal, provide a path, it provide the framework for the context within which the company's strategies are formulated. That means it is basically what guiding the actions of the organization. It provide us the guidelines, जो हमें guidelines provide करता है. In that terms we are working for the purpose. हम purpose के लिए काम करते हैं कि हमारा purpose क्या है. So that comes into the mission statement. That is why it is mentioning that it provides the framework and context within which the company strategies are formulated. ये हमें वो context देता है, ये हमें वो framework देता है जिसके अंदर हम लोग actually अपनी company की strategies को फॉर्मुलेट करती हैं. सो इन दैट टर्म्स यस, किसी भी तरीके की मिशंस या किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हुए वी डेफिनेटली रिक्वायर्ड सर्टेन काइंड ऑफ ना विजन एंड मिशन. अगर एक कंपनी अपने मिशन और विजन दोनों को डिफाइन नहीं कर पाती है, इन टर्म्स ऑफ द कंपनी इज लैकिंग टू फॉर्मुलेट द इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज. Then objective and goal, that is the another part of our strategic intent, because our strategic intent is the kind of working on the hierarchy, that is vision, mission, objectives and goal. So now we were discussing about the objective. Objective is basically an end that can be reasonably achieved within an expected time frame and with available resources. So that is, it is what kind of the end mean, यानी कि जो फाइनली एक आपका टारगेट है या फाइनली आपका जो गोल है जो आपको अचीव करना है, दैट्स कम्स इनटू द ऑब्जेक्टिव. सो इफ वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव इन जनरल टर्म्स, and an objective is a broader in scope than a goal. It may consist of the several individual goals. So objective are basic tool that underline all the planning and strategic activity. अगर हम एक गोल की बात करते हैं या हम एक टारगेट की बात करते हैं तो दिस कैन बी एन इंडिविजुअल टारगेट और इंडिविजुअल गोल. इन टर्म्स ऑफ जब हम अपने ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव आर मोर टुवर्ड्स वर्किंग फॉर अ ग्रुप, यानी कि एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है. सो दैट इज वाई इट इज़ अ बेसिक टूल. ये एक बेसिक टूल माना जाता है जिसके थ्रू कंपनी अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकती है. सो दैट इज वाई इट इज मेंशनिंग इन दी स्लाइड्स ऑल्सो that objectives are a basic tool that underline all the planning and strategic activities. So yes, now we are moving towards the goals. What is goals? It is what and the observable and measurable end result having one or more objective to be achieved within a more or less fixed time work. जब we were working on to the measurability part, when we were working on to the ऑब्जर्विंग पार्ट, सो दैट मीन्स जब हम लोग अपने एंड रिजल्ट को मेजर करने की बात करते हैं तो दैट्स कम्स इनटू दी गोल. वो हमारा गोल डिफाइन करता है मोर और लेस ऑफ द फिक्स्ड टाइम फ्रेमवर्क, जो कि हमें एक फिक्स टाइम फ्रेमवर्क में परफॉर्म करना होता है. दैट्स कम्स इनटू दी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल. It is all about the pyramid of the strategic intent. After understanding that pyramid of the strategic intent, you get more ideas about strategic intent.
Strategic intent is always formulated by three things, that is vision, aim and missions. These vision, aims and missions always related to the further priorities, objectives. After, if the organization have a priorities, that means the organization must have the decision criteria. उसके पास कुछ decision criteria होंगे, कुछ strategic initiatives होंगे. At the same time, the company have an aim. So that aim particularly leads towards the decision criteria, strategic initiatives, at the same time strategies itself. If the company have a certain kind of an objective, that objective would lead towards the strategic initiatives as well as the strategies. So yes, our strategy intent is affected by the mission, vision and aim of the organization. Vision is affected by the priorities and aims of the organization, whereas mission is all affected by the objectives and aim of the organization. So this is the overall the pyramid of the strategic intent, which gives you the brief idea about what is strategic intent. Then strategic intent in practice. अगर हम strategic intent की बात करते हैं in real terms, तो what is that? It is what acceptable to the stakeholder. आपका strategic intent जो है आपके stakeholder को ज़रूरी है उन्हें accept करना. That means क्योंकि when you are talking about the strategic intent, that means you are working on the mission and visions and the aims of the organization. Because of this mission, vision and aim, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, दे गेट एन आइडिया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी फोकस ओरिएंटेड है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगी. दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सेप्टेबल टू स्टेक होल्डर्स. Then consistent with the history and the culture of the enterprise. That means it must be work with the history and the culture of the enterprise. आपका जो भी मिशन या विजन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करता हुआ होना चाहिए. Then must scratch beyond its present aspirations and practices. Yes, it is what आपका जो मिशन या और जो विजन स्टेटमेंट है, it must be beyond आपकी जितनी भी आज के क्राइटेरियाज हैं या पास्ट में आपने जो परफॉर्मेंस किया वो उनसे बियॉन्ड होना चाहिए, उनसे अलग होना चाहिए, उनसे बड़ा होना चाहिए. देन the another is well trained to be based on the inspired guess of a future. That means yes, आप अगर मैं विजन की बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो विजन इज़ व्हाट, मैं 5 साल बाद डाउन द लाइन कहाँ परफॉर्म कर रही होंगी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ 5 साल बाद परफॉर्म कर रही होगी. सो दिस इज़ व्हाट आई एम इंस्पायर्ड, आई एम एक्चुअली गेसिंग जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर करता हो परफॉर्म करने के लिए. सो दैट्स कम्स इनटू दी well trained to be based on the inspired guess of the future. Then include both visions and goals. हमारा strategic intent जो होता है उसके अंदर visions और goals दोनों ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Then yes, it is the kind of the overall picture of the organization कि हमारा जो strategic intent है वो जब goal और vision से बनता है, so these all goals and visions are affected by the various other outer factors. सबसे पहले स्टेक होल्डर ग्रुप, हमारा जो स्टेक होल्डर ग्रुप होता है उनसे हम उन्हें डिसाइड या उन्हें देखते हुए हम अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाते हैं. एट द सेम टाइम हमारी जो भी कंपनी की हिस्ट्री होती है, जो ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं, उसके बिहाफ पर हम अपना स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ द लीडरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द लीडरशिप इज बेसिकली कि हमारा जो भी लीडरशिप स्टाइल होता है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट. और एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस, यानी कि हम किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं, कैसे उन्हें फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, इनसे भी इफेक्ट करता है हमारा स्ट्रैटेजिक इंटेंट. एंड येस एट द सेम टाइम इंस्पायर्ड गेसेस फॉर द फ्यूचर. अगर हम अपनी फ्यूचर टारगेट्स, फ्यूचर गोल्स को जब बनाते हैं, दिस ऑल कम्स इनटू द strategic intent. So stakeholders inspire guess of the future, histories or the ownership structure, strategy formulation process और leadership. ये सारे factors जो हैं ये किसे affect करते हैं, हमारी strategic intent को affect करते हैं. So yes, this is all about the today's session. So there are the questions which you have to do it yourself. The first one is explain the strategic intent. You have to explain the strategic intent and all the factors which actually affects the strategic intent. The strategic intent hierarchy, you have to define that also. Then explain the process of a business strategy. Business strategy का जो 4 elements वाला process था, you have to mention
or describe that also. So yes, thank you so much. Happy learning. We learn.